प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम का यह संबोधन इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल में रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सुब्रमण्यम भारती को किसी एक पेशे से नहीं जोड़ा जा सकता है। वह एक कवि, लेखक, संपादक, पत्रकार, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, मानवतावादी और भी बहुत कुछ थे। उनके काम, कविताओं, दर्शन और उनके जीवन पर काम किया जा सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकवि भरतियार की प्रगति की परिभाषा में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी नजर में महिलाओं की आजादी थी। बता दें कि भारतीय पुरस्कार की स्थापना 1994 में की गई थी। हर वर्ष यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया हो। चीफ मिनिस्टर श्री पलानीस्वामी जी, मिनिस्टर श्री पंड्या राजन, श्री के रवि, फाउंडर वनविल कल्चरल सेंटर, distinguished dignitaries, friends, vanakkam, namaste. I begin by paying tributes to the great Bhartiyar on his Jayanti. On such a special day, I'm happy to be taking part in the International Bharati Festival. I'm also pleased to present the Bharati Award for this year to the great scholar Sri Srini Vishwanathan ji, who has dedicated his entire life to research on Bharati's works. I appreciate him for actively pursuing research even at the age of 86. How to describe Subramaniam Bharati? This is very difficult question. Bhartiya cannot be linked to any single profession or dimension. He was a poet, writer, editor, journalist, social reformer, freedom fighter, humanist, and much more. One can only marvel at his works, his poems, his philosophy, and his life. He also had a close link with Varanasi, which I have the honor of representing in the parliament. I recently saw that his collected works have been published in 16 volumes. In short, life of 39 years, he wrote so much, did so much, and excelled in so much. His writings are a guiding light to us towards a glorious future. Friends, there is much that our youth today can learn from Subramaniam Bharati. Most importantly, to be courageous. Fear was unknown to Subramaniam Bharati. He said, "Accha millai, accha millai. Accha menbadilleya. Iccha kuttu lorelam. Edirtu nindra podirum." It means, fear I have not, fear I have not. Even if all the world oppose me, I see this spirit in young India today. I see this spirit when they are at the forefront of innovation and excellence. India's startup space is filled with fearless youth who are giving something new to humanity. Such a can-do spirit will bring
wonder for our nation and our planet. इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।